Dear student, today we are discussing the next chapter in the series of Re-Neet examination 2026. Now our today topic is ray optics. In this chapter we are talking about the important concept just like which are asked in previous year. Suppose we are talking about lens formula, mirror formula, lens maker formula and many more concept of lens and mirror, sign convention also, and then we also talking about the prism, that is also very important. Then we are talking about the that is microscope and telescope. These are the main concept here, right? So let's go with the first question which are asked in 2026 examinations. So whenever I am talking about first question, the question is based on the prism. So prism is given to you that in this given condition that a monochromatic light is passing through the equilateral prism, that angle A is 60 degree, this is angle of prism, right, as shown in figure. Then refractive with parallel to this means this line and this line are parallel to base, then angle of prism is this angle of incident will be how much? This is 50 degree. Then what is the minimum deviation they are asking to you? Okay, so first of all we are talking about the basic concept of prism. So whenever we see the basic concept, these are the prism, they are having this type of structure. These are prism, this is the base and this is the edge part. Now whenever I talking about the color of prism, so when the white light is passing through the prism disperse into the 7 color, that is wave gear, where violet is the lowest and the red is the more, like we can say the del of r will be less with respect. Suppose this is the minimum deviation, so del of r will be less than del of violet. Okay, these are the condition. So these are written here formula. Now whenever I am talking about the angle of deviation, this is the angle of deviation angle, right? Whenever the light is coming, they are passing with this point, and this is angle of deviation. The formula of angle of deviation is that is del is equal to I1 plus that is I2 minus A. Okay, this is I1 and this angle is I2, or we can say that emergent ray, that is E. Okay, these are the condition. Now when I talking about condition for minimum deviation, so in this case I1 and I2 is equal to I होता है बच्चे, and the R1 is equal to R2 is equal to R होता है. So ये केस देखो यहाँ पे लिखा आपको और ये कंडीशन लिखा, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये आता है. गेटिंग? और अगर यही मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, इफ यू टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री, देन मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला इज दिस वन, del minimum is equal to A into mu minus 1. This formula are also very important. Okay, and these are certain condition is given to you. So we are going towards the next question. That question given to you, this one, right? So in the case of, they are saying to you I and E are equal, and now we are know about that I1 I and E are equal. So we can say that the A is equal to how much? That is I plus E minus del. According to given formula, this formula is given to you. So we can say that minus del is equal to how much? That is A minus 2i, right? So we can say del is equal to 2i minus of A. These are the formula. Now we are putting the value of del is equal to how much? That is 2 into 50 on A का value 60 दिया बच्चे. So we can say that this is how much? 100 minus 60 is equal to 40 degree. So option number C will be the correct answer of this question, right? Easily we are finding the value of this from the given condition. So these are the condition. These are the condition is given to you. We are getting this value from the derivation of the del. In this slides also see this condition is given to you. Del is equal to this value, right? This value, and this is the condition here. So we are using the same formula here. Okay, understood? चलो अब इसके आगे चलते next question पे. Now we are going to the next question. In next question they say that in a case of convex lens, the ray of light emerging from the object parallel to the principal axis of the lens after reflection. So they say that कि अगर ray of light reflection के बाद parallel हो रहा है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि आपका जो line बनेगा ना, वो जो image बनेगा ना, वो कहाँ पे बनेगा, where the image is formed, right? So we are talking about the case of refraction. Okay, we can say that the which lens is given to you, that is concave lens ना. तो concave lens में अगर ray मान लो parallel है बच्चे surface का, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे हो जाता है. ठीक है, रे इज पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज डाइवर्जेस, तो इसमें ना इमेज आपका पीछे की तरफ बनता है. योर इमेज इज फॉर्म हेयर, नॉट दिस साइड, योर इमेज इज फॉर्म दिस साइड, बैक साइड में F2 के पास इमेज बनेगा आपका. ठीक है, बट अगर मान लो आपका रे, सपोज योर रे इज ऑलरेडी डाइवर्जेस, पहले से डाइवर्ज है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन का दिया हुआ है, और बाद में पैरेलल हो रहा है बच्चे. व्हेन द रे इज प्रीवियसली डाइवर्टेड एंड बाद में आपका पैरेलल हो रहा है, देन द रे विल डाइवर्ज एट दिस पॉइंट. यहाँ पे इमेज बन रहा है इस वाले पॉइंट पे, और एट दिस पॉइंट द इमेज इज फॉर्म एट दिस पॉइंट, दैट इज समथिंग F1. सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, व्हाट आर द ऑप्शन? ओके, द पासेस थ्रू F2F. 2F से तो पास नहीं हो रहा बच्चे, बिकॉज लेंस में अगर आपको पता होगा
लेंस में क्या होता है बच्चे, पहला वाला फोकल लेंथ होता है f1 एंड दूसरा होता है 2f1. ये होता है बच्चे 2f2, सॉरी f2 एंड दिस वन इज 2f2. ओके, जो C होता है ना उसको 2f2 बोलते हैं. तो 2f2 से तो पास नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट. अपीयर्स एट डाइवर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे अपीयर होगा, दैट विल बी करेक्ट वन, राइट. इमर्जिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी गलत है बच्चे. एंड द पासिंग थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे पास नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट ही प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत है. तो ऑल आर रॉन्ग, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट. नाउ व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन में देखो माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है. दिस इज द माइक्रोस्कोप हैज दिस length is given to you, means what they are saying to you, the which length is given to you here. So we can say that the focal length is given to you of objective lens, means f objective is given to you 2 centimeter, right, and the eyepiece lens is given to you 4 centimeter. So fe is given to you 4 centimeter, right. So in this case they say that the length of tube is how much, that is 40 centimeter, L is equal to 40 centimeter, okay. And the D is given to you, distinct vision will be given to you how much, that is 25 centimeter, means this is a visible ranges, okay. So first of all this condition is given to you. They said that magnification of microscope, actually the formula of magnification of microscope is L by f naught into, that is D by fe, okay. So we can say that this is 40 by 2 into 25 by 4, so we are getting this is 10 time, and this is how much, that is 5 time, so this is 125. So the magnification is magnification of microscope, okay, that is 125. This is the correct answer, although I am giving you the basic concept of telescope and microscope in these slides. Now see this is the type of basic microscope, we can say that first part, okay, but actually it is not look like the same. I am talking about different diagram also. And this is that is microscope, compound microscope, in which the two lenses are used. In the case of simple microscope only one lens are used, right, this one. And these are the type of telescope. In this there is a length of telescope also there, that is this is the length formula, right, f naught plus fe. I am showing in another diagram also. The basic magnification formula is this one, okay. I am just right now I am talking about magnification of these two part. Whenever I am talking about next slide, see this. In the case of simple microscope only one lens are used, okay. In this lens, this is the object distance from here, this is u value, and this is the distance of image from the lens, right. And here is the eyepiece, from here you are observing the image, and these are the object which are seen by the human being, right. So there is a two condition. First condition, when the image is formed at near point, तो condition magnification का ये होता है बच्चे simple microscope में. और when the image is at infinity point, then condition of microscope is them same. So we are talking about next compound microscope. In compound microscope two lenses are used. First is objective one, second is eyepiece lens. तो जो हमारा क्वेश्चन था बच्चे वो compound microscope था. Why? Because in this part also the two lenses are given to you. See this is the objective lens and this is the eyepiece lens. तो दो लेंस दिया हुआ है, तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड वाला है. तो यू आर यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फार्मूला, राइट. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिस इज गिवन टू यू. सी दिस इज द फार्मूला, राइट. Magnification is this one. So in this case also two magnification formula are there. See this, first magnification is when the image is found near point. So these are the formula near point का, है ना. These are the point. We can say that this is the object distance, this is the focal length of objective lens, this is the image distance, okay. यहाँ से यहाँ तक देखो इमेज बन रहा है बच्चे, तो ये V0 हो जाएगा और यही इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर eyepiece lens, राइट. एंड द इमेज इज फॉर्म एट दिस सर्टेन पॉइंट, ओके. इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगा, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द, now this question is completed, no, this question is completed, okay. We are already getting the 125 answer, okay. Now I am talking about the next part. Next part is the question asked in 2025 NEET. These are also a very very easy question, okay. These are the based on basic principle of the focal length, right. So in the case of, in the certain camera, they say that the combination of, in a certain camera the combination of four similar type of convex lens is coaxially in contact. So whenever the principle, we can say that the any lenses are in contact, then power of combination will be added. So P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4. If the power of all part will be P, then we can say that this is P plus P plus P plus P become how much, that is 4 into P. Means according to given option the power of 4P means this and this may be correct, these two are wrong, right. And they say that magnification. So magnification total, M effective formula will be how much, multiplication of all magnification. Multiplication of all magnification, these are the formula, right. So we can say that
that is m power 4 because all magnification is correct. So I think option number 1 is wrong. Sorry, option number 1 is correct and rest all option is wrong. And one more relation we have, the power is equal to 1 upon focal length, that is in meter. Okay, the unit is diopter. Okay, the unit is diopter, and we can say that also, that is 1 upon 100 upon, that is f in centimeter. So these are the formula of power, right? So these are the basic formula of power we are talking about here, right? Now next question is talking about the image formation. Statement 1 is given to image is formed need a rectangular that is regular reflection or reflection. Very good. That first statement is 100% correct. Means for forming any image we need either reflection or refraction in the case of we can say that optical part, optics, right? Second, they say that in the variety of color, अगर आपको कलर चाहिए, an object was seen around due to the constant color, का ना constituent color that light incident on them. ओके, डेफिनेट सी बात है बच्चे कि जब आपको वैरायटी ऑफ कलर चाहिए तभी आपको दिखेगा जब आपको वो लाइट इंसिडेंट होगा आपके आई में, टाइप. तो दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, राइट? Option C correct. Now in this case, see this again, the prism question is there and the concept look like are same. Now in this case they are asking to you, see this, the ray is coming here, okay, and then again the ray is parallel to this line, right? So angle E is equal to how much? 90 degree is this point, right? ये R2 होगा बच्चे और ये आपका R1 एंगल होगा और एंगल I आपको दिया कितना 30. देखो μ1 एयर का 1 होता है बच्चे और प्रिज्म का μ2 मैं बोलता हूँ μ है और ये इधर का भी 1 होगा, ठीक है? μ1 इक्वल टू 1. Getting to you. The angle of prism आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है? सो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपको म्यू निकालना, ठीक ना? चलो ठीक है, निकालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट. तो पहला स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखोगे आप? 1 इंटू साइन 30 है ना, इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1. ओके, सो ये हाफ हो गया बच्चे, हाफ इक्वल टू म्यू साइन R1 हो गया, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. नाउ स्नेल्स लॉ आप सेकंड वाले कॉर्नर पे लगाओगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर, राइट? सो स्नेल्स लॉ at first means first point, and here Snell's law at second point. Whenever apply Snell's law at second point, so we can say that mu into sine R2 is equal to 1 into sine 90. So we can say that sine R2 become how much? That is 1 by mu, because sine 90 is 1 होता है बच्चे, 1 by mu आ गया. अब यहाँ से एक हम तरीका निकाल सकते हैं, देखो एंगल निकालने का. अगर मैं इसको R2 लिख दूँ बच्चे, साइन थीटा क्या होता है? P by H. ये म्यू आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू स्क्वायर माइनस 1. ओके, सो वी गॉट अ ट्रायंगल हेयर. सो फ्रॉम ट्रायंगल वी कैन easily find the value of mu here, right? So whenever I talking about mu value, so I can use this formula. So from 1, ये सेकेंड इक्वेशन है. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट हाफ इक्वल टू म्यू इंटू व्हाट इज साइन आई? साइन R1 इज ये, साइन R1 ये होगा ना, तो दैट इज वी कैन से दैट B by H ना, P by H, सॉरी. तो दैट इज वी कैन से दैट रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू. ओके, सो म्यू म्यू कैंसिल हो गया बच्चे. सो वी कैन से दैट हाउ मच? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो दिस बिकम 1 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1 गोइंग दिस साइड. सो वी कैन से दैट 5 बाई क्या आएगा? 5/4 आएगा, दैट इज म्यू का स्क्वायर. सो अभी आप क्या बोल सकते हो इसको बताओ? दैट इज म्यू इक्वल टू रूट 5/2. दिस आर द करेक्ट ऑप्शन. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? Easily we are getting the value of this question. Now whenever I am talking about next question, the small telescope वाला क्वेश्चन है, ठीक है? सो टेलीस्कोप का क्वेश्चन क्या है बच्चे? यही फार्मूला, बेसिक फार्मूला. टेलीस्कोप में क्या होता है? द टेलीस्कोप इज गिवन, फोकल लेंथ गिवन टू यू, दैट इज एफ इज 140 सेंटीमीटर. ओके, ये ऑब्जेक्टिव का है तो ऑब्जेक्टिव लिख लिया हमने. और आईपीएस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? आईपीएस फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. ओके, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी. तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के पहले टेलीस्कोप का आप कहानी देख लो. देखो टेलीस्कोप ये होता है बच्चे, तो मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होता है? दैट इज दिस, ये वैल्यू होता है. आइदर यू कैन से दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज Fe/F0 भी होता है. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वेट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू दैट इज F0/Fe भी लिखते हैं हम, बिकॉज F0 और यू, जो पार्ट है ना यूई और F0 सेम पॉइंट पर लाई करता है. तो वी कैन से दैट F0/Fe इज ऑल्सो करेक्ट है, राइट? सो अगर मैं बात करता हूँ बच्चे इसका मैग्नीफिकेशन का, दैट इज F0/Fe. We can say that 140/5. We can say that this is how much? 28. So we can say that 28 is the correct answer here, right?
Now, when I'm talking about series, the question asks in 2023 NEET. Okay, so in this case, if the three different transparent medium as shown in the given diagram, okay, then what amount of images formed, okay, how many real images formed here. So देखो इसका rules होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक रूल होता है बच्चे, how many mu is given to you, that is mu 2, again mu 3, right? If 3 mu is given, the number of images also form 3. Okay, so we can say that lens is made of 3 material, so there is 3 image formed. Okay, so how many material are used here, how many color are used here, according to that only the image is formed here. Okay, so these are the basic concept. Okay, now see here, the concept is also given to you. In the lens of creation of image layer in the different refractive index of a given wavelength of light, number of images corresponding to object equal to the type of refractive index. Okay, they are equal, right? So suppose here I am talking about if the number of images formed by the lens corresponding to the object is equal to type of refractive index. So ये note point है बच्चे, and this point is also very important. जितने number of refractive index होंगे उतने number of image होंगे. अब देखो इस वाले केस में जैसे एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसमें 2 ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. देखो एक म्यू वन मतलब म्यू वन है और एक म्यू टू है. सो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना बना बच्चे, 2 बना. तो द नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इमेज इन दिस केस. ओके, so this question asks in very old question are there, so might be this concept are repeated or might be not also, right? हाँ, we are talking about next question. Now again ये देखो ये क्वेश्चन आपका प्रिज्म का क्वेश्चन है, बट इन दिस केस ना दिस एंगल इज गिवन टू 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू लेस देन 6 डिग्री. ओके, लेस देन 10 डिग्री. सो वी कैन से दैट R2 means you know about that this angle is also 6 degree. Why? Because we know about that a line two angle, this means that is this angle and this angle both are same, right ना. तो ये एंगल ये वाला आपका A है और ये R है, तो ये भी 6 डिग्री होगा बच्चे. तो वी कैन से that is R2 is equal to A angle that is 6 degree in this case, right? So we can say that A is equal to R1 plus R2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, and that is equal to 6 degree. So we can say that how much, that is mu1 sin R2. I am talking about Snell's law applying at this point. Okay, R2 that is equal to mu1 sin E, that is equal to mu1 sin E. Okay, mu1 sin E we are talking about. Okay, mu1 sin E we are talking about here. Now we can say that this is R2 and mu1 sin E. We can say that this mu is equal to how much, because the mu is equal to 1.5 is given to you. So 1.5 sin R2 means sin 6 degree is equal to how much, that is mu1 is equal to 1 sin E, right? Okay, and we know about that the sin theta is approximately equal to sin 6 theta, means theta is equal to approximately 6 degree in this case, right? So we can say that 15 मतलब 1.5 into 6 is equal to sin E. So both the side we are removing the sin theta, right? So both the side sin theta remove कर दिया बच्चे, because sin theta we can say that sin E approximately equal to है ना साइन दैट इज वी कैन से दैट 6 डिग्री का वैल्यू साइन दोनों कैंसिल होगा, बिकॉज वैल्यू इज वेरी लेस. सो ई इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 9 डिग्री हियर, बिकॉज 6 into 1.5 बिकम 9 डिग्री. सो वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन नंबर दिस वी कैन से दैट फर्स्ट इज द करेक्ट वन, राइट. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is related to the we can say that the lens maker formula. Okay, so in this type of question we are firstly knowing the concept here. So this is the lens में 2 लेंस होते हैं बच्चे, concave and convex and concave lens. Okay, so in the case of convex lens the focal length is positive, in the case of concave lens the focal length is negative. So this is the lens formula, this is the magnification of lens formula, right? Okay, magnification positive होता है यहाँ पर, and this is the lens maker formula. Okay, this is a lens maker formula. So sign convention is also given to you here. Okay, so accordingly this things are given to you, just see here. Now we are try to solve this question. Okay, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्ट डिवीजन. तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, तो सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड इधर का हो गया. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चे, तो देखो फर्स्ट पार्ट को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये R1 का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना, एंड R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो अगर आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना होगा बताओ, दैट इज म्यू -1 अपॉन 1/R1 -1/R2.
So we can say that 1 by f1 is equal to 1.6 minus 1 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 20। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -3/100 आएगा आपका, ठीक। सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। सो अगर इसको सॉल्व करोगे आप, सो ये पार्ट आएगा दैट इज़ R2 बिकम 20 सेंटीमीटर, और ये पार्ट आएगा बच्चे R1 बिकम 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, दैट इज़ 1 बाई f2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ 1.5 माइनस 1 बाई 20 प्लस ये माइनस में होता है, दिस इज -20 सेंटीमीटर, 1 बाई 20 प्लस 20 सेंटीमीटर, 1 बाई 20 सेंटीमीटर, ओके। सो ये जो 1 बाई f2 है ना बच्चे, वो कितना आएगा, 1 बाई 20 आएगा, ठीक। एंड थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला लुक लाइक दिस, दैट इज R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and R2 is also 20 centimeter, okay। So we can say that the 1 by f3 is equal to how much, minus of 3/100, as same as first one, पहला वाला तो थर्ड वाला सेम आएगा, ठीक। So what is the f total, f total is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, so f total become how much, that is -1/100। तो f total कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, योर आंसर इज बी, करेक्ट वन, ओके। नाउ दिस इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन 2023। सो अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है इफ टू थिन लेंसेज आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ दोनों का सेम है बच्चे, बट दे आर कॉन्वेक्स एंड देयर वन आर कॉन्केव, तो एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है। तो पहले तो आप फोकल लेंथ अगर दोनों का सेम है तो आप इसको ऐड करोगे, फॉर्मूला यही होता है, ओके, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। और अगर एक कॉन्केव है मीन्स कॉन्केव वाले का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, एंड कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज निगेटिव, ओके। सो वी कैन से दैट 1 बाई एफ, मतलब एक तो कन्फर्म पॉजिटिव होगा एक कन्फर्म निगेटिव होगा। सो 1 बाई एफ टोटल इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ माइनस, एक उसको मैं माइनस में ले लेता हूँ 1 बाई एफ। सो वी कैन से दैट 1 बाई एफ माइनस ऑफ 1 बाई एफ, तो ये वैल्यू क्या होगा बच्चे, 1 बाई 0, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। सो इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। So that's all for today. Now happy learning, and just try to get good marks in the examination. Try to learn the formula, mug up everything, and try to get very good marks. Best of luck from my side to all of you.